નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે 2025-26ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી, તેમાં જે હિન્દી વિષય છે તે હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 1 તેરી હે જમીનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ધોરણ 8ની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર આપવામાં આવેલા દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। અને ખાસ મહત્વની વાત એ છે કે હવે તમે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમારા વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો, તો જરૂરથી મેળવી લેજો। લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથી પાઠ નંબર 1 તેરી હે જમીનું संपूर्ण सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1 अ, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो सवाल, तेरी है जमी काव्य का प्रकार है, तो जवाब आवशे प्रार्थना काव्य। बीजू, जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जवाब आवशे विकल्प बी शरीर। त्यार पछी त्रीजो सवाल, उससे सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है, तो जवाब आवशे भगवान। चौथो सवाल, आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो जवाब आवशे धरती। पांचमो, काव्य में संसार के लिए शब्द है, तो जवाब आवशे दुनिया। त्यार पछी छठो सवाल, काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो जवाब आवशे कृतज्ञता। सातमूँ, वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो जवाब आवशे उपसर्ग। आठमूँ, मनुष्यता शब्द में प्रत्यय है, तो जवाब आवशे ता। त्यार पछी आपणे जोईए नवमूँ, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, तो जवाब आवशे प्रत्यय। 10मो सवाल, हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो जवाब आवशे मंदिर। मित्रों, धोरण 3 થી 10ની કોઈ પણ વિષયની જે આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીઓ આવી છે તે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીઓના સોલ્યુશનની પીડીએફ તમારે જોઈતી હોય તો મળી જવાની છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ ઉપર। હવે મિત્રો, તમે વોટ્સઅપ પર પણ આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મેળવવા માટેનો નંબર આપેલો છે 7046222254, અને આપણી એપ્લિકેશન પણ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરીને અહીંયાથી પણ તમે આ સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं, तो जवाब आवशे हमें ईश्वर की कृपा से शरीर और प्राण मिले हैं। बीजो सवाल, यह सारा संसार तेरा है ऐसा कवि ने क्यों कहा है, उत्तर, क्योंकि ईश्वर ने ही यह सारा संसार, पृथ्वी, आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है। ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है, इसलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो सवाल, आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं, उत्तर, मैं भगवान से सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे सद्बुद्धि दे ताकि मैं जीवन में सही निर्णय ले सकूँ। भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे जिससे मैं अपने कर्तव्यों का सबसे अच्छे से निभा सकूँ। त्यार पछी बीजो सवाल, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो જોઈએ उत्तर, इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हमें जन्म मिला है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हाल में है उसकी हमेशा खबर रखना। त्यार पछी त्रीजो सवाल, तू बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने किसे कहा है, क्यों, तो जवाब आवशे क्योंकि भगवान ने हमें यह सुंदर जीवन, शरीर, प्राण, जल, वायु, अन्न, प्रकाश आदि सभी चीज़ें बिना मांगे ही दे दी है। उन्होंने मनुष्य को सोचने, समझने और अच्छे बुरे में फ़र्क करने की शक्ति दी है। इसीलिए कवि भगवान की अपार कृपा और दया को देखकर कहते हैं, तू बड़ा मेहरबान। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 4, इस चित्र की मदद से कविता की रचना कीजिए। तो अहींया તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાનું વરસાદનું ચોમાસાનું દૃશ્ય છે અને એના ઉપરથી આપણે સરસ મજાની કવિતા બનાવી છે। बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते, रंग बिरंगे कपड़े पहने पानी में छप छप करते, बारिश की बूंद से खेलते, बारिश का मजा लेते, खुशियाँ मनाते, गीत नए गाते। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो અહીંયા આપણને સરસ મજાની જે કવિતા આપવામાં આવેલી છે તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે અને વાંચ્યા પછી જોઈએ આપણે કવિતા ઉપરથી કેટલાક પ્રશ્નો। पहलो सवाल, प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं, कौन सी पंक्ति का भावार्थ है,
तो जवाब आवशे सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। त्यार पछी बीजू सूर्यचंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो जवाब आवशे ध्यान मग्न। त्रीजू बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो जवाब आवशे मंडल। त्यार पछी आगळ कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां चौथो सवाल, कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? तो जवाब आवशे कवि ने हमें ध्यान लगाकर इस संसार की सुंदरता को देखने के लिए कहा है, क्योंकि हर जगह हमें ईश्वर की चतुराई और रचना कौशल दिखाई देता है। पांचमो सवाल, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? तो जवाब आवशे कवि ने सूर्य और चंद्रमा की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि वे संसार को प्रकाश और शीतलता देते हैं। उनकी नियमितता और सुंदरता ईश्वर की चतुराई और रचना कौशल्य को दिखाती है। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 6, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर तो एनो पर्यायवाची थशे भगवान अने खुदा। फूलनु पर्यायवाची थशे कुसुम अने पुष्प। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 7, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? उत्तर, कविता में प्रकृति के फूल, पक्षी, नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, बिजली और रात जैसे बहुत से तत्वों की बात की गई है। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। उसने दरवाजा खोल दिया। तो जवाब आवशे उन्होंने दरवाजे खोल दिए, बहुवचन करेलू छे। तुम छाता लेकर कहाँ जा रहे हो? तो तुम लोग छाते लेकर कहाँ जा रहे हो? तो अहींया छातानी जग्याए छाते थशे। डाली झूल रही है, तो डालियाँ झूल रही है, बहुवचन। मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा, तो हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। त्यार पछी पांचमो, बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो बच्चा प्रार्थना करते हैं। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 7, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अहींया पण आपेલું છે કે ચહુત જરૂરી હોતી શિક્ષા સારે અવગુણ ધોતી शिक्षा। પછી એને આપણે આગળ વધારવાનું હોય તો આ પ્રમાણે વધારી શકીએ। ज्ञान का सागर है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा, सच्चा मार्ग दिखाती शिक्षा, भविष्य को उज्जवल बनाती शिक्षा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो अ प्लस ज्ञान એટલે કે અજ્ઞાન, માનવ પ્લસ તા એટલે માનવતા, ત્યાર પછી છે કુલ વત્તા ઈન એટલે કુલીન, અ વત્તા હિંસા એટલે અહિંસા, શાન વત્તા દાર એટલે શાનદાર। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाया है। तो जवाब आवशे हे ईश्वर, हम इस संसार में तुम्हारी इच्छा से आए हैं। यह जीवन हमारा शरीर और प्राण हमें तुम्हारी कृपा और रहमत से ही प्राप्त हुआ है। त्यार पछी आपणे जोईए आगळ, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन। तो જોઈએ उत्तर, हे परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, यदि तू चाहे तो हमें जीवन दे सकता है और यदि चाहे तो हमें मार भी सकता है। हम सभी तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, क्योंकि तू सबसे बड़ी ताकत रखने वाला है। મિત્રો ધોરણ 3 થી 12ની કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ અને પીપીટી જો તમારે જોઈતી હોય તો તમને મળી જવાની છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। સ્વઅધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન, સમજૂતી પ્લસ સ્વાધ્યાય એટલે કે હાલમાં તમે જે સ્વઅધ્યયન પોથીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તેવી રીતે કોઈ પણ વિષયની સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, પ્રયોગ પોથી, ભૂગોળ પોથી, અંગ્રેજી ગ્રામર, યુનિટ ટેસ્ટ, આઈએમપી પ્રશ્નો, અસાઇનમેન્ટ કે કોઈ પણ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંયાથી તમને મળી જશે। મિત્રો વોટ્સઅપ પર પણ તમે પીડીએફ અને પીપીટી મેળવી શકો છો। વોટ્સઅપ પર પીડીએફ અને પીપીટી મેળવવા માટે સંપર્ક કરી શકો છો 7046222254 નંબર ઉપર, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સૂદ, ક્ષમા, સંગ, સમાચાર, શવ, આવાજ, ખુશી અને જંગલ જેવા શબ્દો છે। તો એમાં આવશે આવાજ, ક્ષમા, ખુશી, જંગલ, શવ, સમાચાર, સંગ અને સૂદ। મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથીનો જે પાઠ 1 છે તે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 2ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલ ઉપર આજે સ્વ અધ્યયન પોથીઓ નવી આવી છે 2025-26માં, તે દરેકે દરેક સ્વ અધ્યયન પોથીઓના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણી આ જે વિડીયો છે તમારા દોસ્તો મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ વિડીયોનો અભ્યાસ કરી શકે।